स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स ताकि आप बन सको नंबर वन ट्रेडर। आज के स्टॉक मार्केट खबरों में हम आपको लेकर आए हैं टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स एंड अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। Torrent Pharmaceuticals. Drug firm on Tuesday reported a net profit of rupees 287 crore for the fourth quarter that ended March 31st, 2023. In the corresponding quarter last year, the company posted a net loss of rupees 118 crore. In the March quarter, total revenue stood at rupees 2,491 crore, up 16.9% against rupees 2,131 crore in the corresponding period of the preceding fiscal. Adani Ports and Special Economic Zone. The company on Tuesday posted a 5.1% year-on-year increase in consolidated net profit at rupees 1,158.9 crore for the fourth quarter that ended March 31st, 2023. In the March quarter, total revenue stood at rupees 5,797 crore, up 40% against rupees 4,140.8 crore in the corresponding period of the preceding fiscal. अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ और न्यू मार्केट अपडेट्स के साथ।